Thousands of people risk their lives collecting trash in one of India's largest landfills. They sort all kinds of waste, even used syringes. In recent years, fires have become more and more common, threatening people who work here and live nearby. The Balswa landfill burned for 2 months starting in April. When temperatures soared over 110 degrees Fahrenheit in New Delhi. Sahabuddin lost plastic and scrap metal he'd been collecting for years. Firefighters extinguished the open flames after about 2 weeks. But people here are still struggling to breathe because they've lived next to the smoldering plumes the whole time. उसकी लाइफ तो समझिए बहुत ही नर्क लाइफ है. As garbage piles up and the planet warms, landfill fires are expected to get worse. We went to India to meet the people who make their living next to a flaming mountain of worldwide waste. Every day, the tens of millions of people that live in the city of Delhi generate 10,000 metric tons of waste. Nearly all of it ends up in one of 3 surrounding landfills. Now, most of these dump sites have gone beyond their capacity and they're overflowing with waste. And that's the real problem today. Balswa was supposed to close more than 10 years ago, but it keeps accepting garbage, up to 600 truckloads every day. Backhoe operators like Rahul move the waste to make pathways for the trucks to drive to the top. जनता के लिए काम कर रहे हैं, सब बना रहे हैं रास्ते. Around 75,000 people, known in India as rag pickers, make their living in Delhi's dumps. सारा बिकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है. जब अब 1 रुपए किलो बिके चाहे 8 सब बिक रहा है. जब देखो जी, मेन तो हमारा स्क्रैप का काम है, प्लास्टिक का भी है, मतलब रद्दी का भी है, हर चीज़ का है, लेकिन अपना मटेरियल अलग अलग करके जब बेचता. The average rag picker earns 200 to 300 rupees a day, about $3 to $4, with plastic and metal being the most valuable items collected. Even when they're not on fire, the landfills pose major health risks. हाँ, मक्खियाँ भी हैं, मक्खियों की भी दिक्कत है. सुबह क्या, शाम क्या, दोपहर क्या, हर टाइम में मक्खी रहती हैं. देख भी रहोगे आप लोग यहाँ पे, इससे भी दिक्कत है. अब ये क्या, ये मक्खी गंदगी तो है ही है, गंदगी की वजह से ही खाने वाने पे बैठती है, तो उससे भी दिक्कत ही है हम लोगों को. ये तो सब चीज़ से दिक्कत है यहाँ पे. Dr. Jivasau has been treating patients who work at the Balswa landfill for over 20 years. डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, मजबूरी है. जो बहुत लेबर क्लास के लोग ऐसे 10 दिन महीना दिन कमाया खाया, और जो कुछ बचता है लेकर के गाँव भाग जाते, गाँव देहात चले जाते. Balswa doesn't have a proper drainage system, so runoff from the landfill makes its way into the groundwater. पानी यहाँ बहुत ही बेकार आता है. दिल्ली गवर्नमेंट के भी पानी बेकार आती है, और ऑलरेडी यहाँ तो ज़मीन के जो पानी है वो ले ही नहीं पाता है, कारण ज़मीन के पानी इतनी कड़वी और इतनी जहर है, तो ज़मीन के पानी तो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं. Scientists use the Air Quality Index, or AQI, to measure air pollution, and India has one of the worst measures in the world. One study said air pollution led to more than 1.6 million premature deaths in 2019. Then there's the odor. स्मेल की भी गंध जो होती है, उसकी महक वो भी बर्दाश्त नहीं होती है. जब आग लगती है तो उसकी भी महक बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी. Not to mention the everyday dangers of rag picking. हर तरीके की परेशानी, कहाँ तक परेशानी बताएं आपको. ये देखो, और दिखाऊँ आपको, पैरों में देख लो, ये देखो. डर तो हमेशा, आपको पता ही है कि डर हमेशा इंसान को रहती है.
So, how did the landfill fires start? Lithium-ion batteries, which are increasingly entering the waste stream, can spontaneously explode. But in India, the brutal heat wave was the most likely culprit. कोई लगाता नहीं है यहाँ पर आग, क्यों? इससे तो हमारा काम चलता है, इससे तो हम 2-4 रुपए कमा के अपना पेट भरते हैं. In addition to plastic and other trash, the methane from decomposing garbage fuels fire. And these fumes contain all kinds of chemicals, which can cause tuberculosis in the short term and cancer if inhaled over a long period of time. हाँ लगाते हैं, हमारे बच्चे लगाते हैं, स्कूल जाते हैं तो लगाते हैं. नहीं, पार्क वार्क तो यहाँ कोई नहीं है, बच्चे खेलते ही नहीं है, फिर भी तो टाइम ही नहीं मिलता. पहली बात तो इतना, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर पे होमवर्क. The fires make a bad situation worse. नहीं तो धुआं इतना होता था, पहले रह नहीं पाते थे, इसलिए क्या करूं, कबाड़ा बचाऊं क्या धुएं से मरूं. Sahebuddin has lived and worked at Balswell all his life. अब क्या करूं, अब ना माँ बाप तो अपना ज़िंदगी हमारा बनाए नहीं, ठीक है. 1984 से मेरा यहाँ, ये मेरे 2 भाई का जन्म है यहाँ का पैदाशी मैं, इसी यहाँ का पैदाशी मैं हूँ, ठीक है, इसी जगह का. He set aside a large pile of scrap metal and plastic as a kind of life savings he was planning on trading in. Then the fires came. जब से कबाड़ा चुगना जलने के लिए, जब मेरा कबाड़ा जल गया, जब से मेरा नुकसान हो गया, तब से मैंने कबाड़ा चुगना बंद कर दिया. मंडी में जाता हूँ, भीख मांगता हूँ. Putting out these fires requires a lot of manpower and equipment. मेरा काम यही है कि कहीं आग लगे वहाँ जाके आग बुताओ, मशीन से बुताते हैं. 9 से 8 बजे 6 बजे तक रहते हैं, फिर अपने अपने रूम पे जाते हैं सब. It took 80 trucks and 200 firefighters to quench the flames that burned from April to June. But mostly, these fires fizzle out on their own. हाँ, पहले भी मतलब 4-5 दिन लगे थे, अब क्या तो भैया वो एक महीना से ही होने को आ रहा है धीरे धीरे करके. पिछले साल भी लगी थी, जब हम आए थे यहाँ पे, जब भी लगी थी, और इस साल तो और ज़्यादा ही लगी है. It only improves in certain months which are in and around monsoon. After the monsoon, you will find that, because of the heavy rainfall, it subsides and your particulate matter goes down and the air quality just comes up a little bit. So the respite is for a brief period. Locals want these sites removed. गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि इसको या तो हटा दो या फिर यहाँ कुछ बनवा दो, जिससे मतलब पेड़ पौधे लगा दो, जैसा शुद्ध हवा आए, इससे वातावरण अच्छा हो, तो सबको मतलब खुशहाली मिलेगी इस चीज़ से. And the local government was fined nearly $65,000 for not taking proper measures to prevent the fire. The Delhi government told us it's working to remove all 8 million metric tons of waste from this site by the end of 2023. Since 2019, the government has operated what are known as trommels that separate recyclable trash from what can be burned to create energy. The rest of the leftovers are supposed to get moved to a different dump site. Delhi plans on opening another waste processing facility here by 2025 and is supposed to expand services for rag pickers. Activists say one solution to the ever-growing landfill is separating the waste before it gets there. If you can reduce the waste amount by taking away the recyclables and the wet waste or the bio waste, very small quantities will go to the landfill. Despite the increasing garbage problem, the amount of waste Indians create per person is far lower than richer countries. Every day, the average American throws out 8 times as much plastic garbage as the average Indian. But India's recycling industry is kept afloat by informal rag pickers who make pennies a day. तो कबाड़ा तो अगर नहीं चुगा जाएगा तो बहुत दिक्कत है. इससे तो बहुत जो चुगने वाले से लेके फैक्ट्री वाले तक, तो इससे तो बहुत बड़े-बड़े पैसे वाले लगे जुड़े पड़े हैं. For years, India's federal government has tried to crack down on waste with tougher laws, banning most single-use plastic. I think everything has been prescribed, but unfortunately, it's the state government and the municipal people who are not following the rules at this point of time. While these solutions are debated and parts of the landfill continue to smolder, the people dependent on it go out for another day of work because they have no other choice. काम ही यही है.
ये तो होता जलता ही रहता है, कभी पत्थर आके गिर रहा है, कभी आग जल रही है, तो ऐसा तो चलता ही रहता है। इतना मेहनत है बाबूजी, अब हम कहाँ करें, हमारे बात तो कोई सुनवाई नहीं है। इस ज़माना में वही तो बात है ना, जिसका पैसा है उसी का वोट है, जिसका पैसे नहीं है उसका कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर। हो सकती है, पर क्या करें, इतना मजबूरी है तो चलाना ही पड़ेगा। बेकार है भाई साहब, ये ज़िंदगी तो बेकार है, फिर भी इंसान क्या करे, पेट तो पालना ही है।